What is up guys, welcome to my channel and in this video हम बात करने वाले हैं the Mi Band 5, yes the Mi Band 5 and please गौर करिएगा इस वीडियो में जो Mi Band 5 दिखाया गया है वो चाइनीज वेरिएंट है as the global variant अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है. So today we are going to talk about the both that what can we expect from the global variant which is going to be launched in India कुछ ही एक दो महीनों में and जो चाइनीज वेरिएंट है. So let's get to it and let's have a look at the Mi Band 5. So let's go with the unboxing. तो चलिए देखते हैं कि हमें बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या मिलते हैं. So first of all, yes, it's the Mi Band 5 itself and its charging cable and a few documentation. Yes, that's it. That's all the box content. हमें बॉक्स में यही कुछ चीजें मिलती है. तो चलिए आते हैं देखते हैं हमारा Mi Band 5 कैसा है. So coming to the Mi Band 5 itself, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसका स्ट्रैप क्वालिटी. तो जैसे कि हम जानते हैं कि Mi Bands का स्ट्रैप क्वालिटी यूजुअली काफ़ी अच्छा होता है एंड सो एज इसमें भी Mi Band 5 का भी स्ट्रैप क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग. एंड इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं देख सकता हूँ कि Mi Band 5 में इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी ही बढ़िया है जो कि बहुत ही यूजफुल है. Now coming to the display, इसमें है 1.1 inch कैमरा डिस्प्ले which is like you can just feel the colors and फिर इसमें आता है 16 बिट का कलर रेंज जो कि थोड़ा सा एक्चुअली Mi Band 4 से थोड़ा कम है क्योंकि एज आई रिमेंबर Mi Band 4 में 24 बिट का कलर रेंज था. एंड टॉकिंग अबाउट इट्स ब्राइटनेस, ये 450 निट्स का ब्राइटनेस देता है जो कि विच इज गुड, एक्चुअली इट्स प्रीटी गुड क्योंकि आपको अंडर द सन अब आउटडोर एरियाज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट इट अदर स्पेसिफिकेशन, इसमें भी बाकी के Mi Band जैसा अनदर डिस्प्ले एक टच बटन मिल जाता है एंड इट हैज अ बैटरी ऑफ 125 mAh जो कि आपको नॉर्मल हैवी यूजर्स में 14 to 13 डेज तक आपको बैटरी लाइफ दे सकता है. एंड अगर आप इसको बैटरी सेवर मोड में यूज करते हैं सो 20 डेज तक का बैटरी लाइफ आपको दे सकता है. इसके बैटरी को चार्ज होने में लाइक टोटल 2 घंटे लगते हैं जो कि आपके इसके नए मैग्नेटिक चार्जर से चार्ज कर सकते हैं जिसका फायदा ये है कि आपको अब अपने Mi Band को चार्ज करने के लिए उसको आपको स्ट्रैप से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा. फिर आपको इससे मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 आपके फोन से कनेक्ट करने के लिए एंड 6 एक्सेस एक्सेलेरोमीटर जो कि आपके स्टेप्स एंड अदर मूवमेंट्स को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है. फिर आपको मिल जाता है PPG हार्ट रेट सेंसर जो कि Mi Band 4 जैसा ही है बट लिट थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है. एंड बाकी की चीज़ें भी आपको मिल जाती है, ये भी Mi Band जैसा ही वाटर रेजिस्टेंट है, Mi Band 4 जैसा ही वाटर रेजिस्टेंट है. So coming to its other features, it's got pretty much the same features as the Mi Band 4 which is including all your activity trackers and your sleep monitoring and the different times setting up your alarm and many other things as same as the Mi Band 4. So I'm not going to bother you with those things which are as similar as the Mi Band 4. Now talking about it, there are also some new features into the Mi Band 5. So talking about the new features, it got an breathing exercise, really helpful. It and also focusing on the female health, it got a menstrual cycle tracking, it got a stress level monitor, and you can also use your Mi Band 4 as your mobile phone camera shutter. It's got Bluetooth, it can work as a Bluetooth shutter. Talking about the sports modes, the Mi Band 4 got 6 sport modes tracking, but in the Mi Band 5 you get 11 sports modes tracking options. So yeah, increased tracking options. And another cool feature that I forgot to mention, that now in the watch face you can actually customize your widgets. Yes, all you have to just tap and hold and you can select that what widget you want on your watch face. And here I'm also giving you side-by-side comparison of the Mi Band 4 and the Mi Band 5 which will like help you to do a decision. But if you ask me that if you're owning a Mi Band 4, that do you need to upgrade, it is a good decision to upgrade to the Mi Band 5, I would like to say actually no, because seeing on the base variant of the Mi Band 5 there are actually a very slight upgrade to the Mi Band 4 which is not worth of upgrading. But if you are owning a Mi Band 3 and you want to upgrade to the Mi Band 5, yes you should.
But wait, not so easy. The Mi Band 5 NFC version got an NFC chip in it for the other features of the NFC like payment and other stuff, and it also got a smart speaker with an audio input for the voice command and everything. And what the rumors are that the NFC version will going to also be launched in the global variant. So now, if talking about the NFC version, if you really want to upgrade to the NFC version, it's a really good choice, and I really think you should upgrade to the NFC version. It's going to be great. And talking about the pricing, the Mi Band 5 base variant is going to launch around rupees 2000, and the NFC version could launch around 2500 in India as per the rumors. Thank you so much for watching my video, and if you have any suggestion, please comment down below. And if you like the video, hit the like button and subscribe to my channel. It helps a lot. Yeah, bro, please just do that. Okay, yeah, just do that. Thank you.